Great story. Compelling and rich. हम लोग ये वर्ड लेजेंड ना ऐसे ही मतलब फेंक देते हैं लोगों पर, बट दिस इज वन ऑफ दोस डेज व्हिच इज रियली क्लोज टू मी बिकॉज यस, मिलान एंड चेल्सी लेजेंड्स लीव their respective clubs or on the verge of it. भाई देखना एंड तक because there's a lot to be discussed about them, a lot of memories that I have, definitely a soft corner and more, but not just that, वो इफेक्ट करता है ट्रांसफर्स पे and we'll talk about these clubs transfers and a couple more. So hit that like button and of course let's get in till the end. So bhai, we are talking about obviously the N'Golo Kante and Paolo Maldini. To begin with, obviously I will start with the current Chelsea player N'Golo Kante. अभी भी as things stand, जब मैं record कर रहा हूँ वीडियो सुबह सुबह, I know that he is a Chelsea player, but I also know that he is going to go to Saudi Arabia. Time has come. Very emotional, I'll be very honest, and I think that this has to be one of the moments जहाँ पर मुझे लग रहा है this is really a new era. Finally, हमें वो point आ गया है. Not just for Chelsea, and we'll talk about Milan, why as well. But the guy who came, भाई मतलब फ्रांस के लोअर लीग से आया था इंग्लैंड में. He is going to go to Al-Ittihad for 100 million per year contract for a couple of years. But French league में भाई he was in the lower divisions, came up the ranks within a year. फिर 2016 में आया, लेस्टर में प्रीमियर लीग जीत गया. चेल्सी में obviously he won not just the Premier League in the first year, but also the FA Cup, the Europa League, Champions League, Club World Cup, and of course the Super Cup. इतने सारे चीज, but literally he won everything. Just एक कैराबाओ कप रह गया यार, वो भी अगर वो मेसन माउंट, जिसके बारे में शायद हम वापस से बात करेंगे in a few days, and Pulisic maybe would have scored that goal or chances against Liverpool last season, तो हो सकता है वो भी जीत जाता. N'Golo Kante, मतलब Rudiger once said about him that जो भी N'Golo Kante को hate करता है ना, something is wrong with that person, and that is it. The guy with a smile, हमेशा हम बोलते हैं one of the most underrated players. Yes, हम बोलते हैं क्लाउड मैकेलेले का अपना एक पोजीशन था, but N'Golo Kante engine and a half. अकेला N'Golo Kante खेलता है पिच पर तो it's like at least 2 players if not more. Yes, मैं exaggerate भी कर रहा हूँ भाई. Like we say, 11 N'Golo Kantes make up the team and then you're winning. You know, that is what हम बोलते हैं. याद है भाई? N'Golo Kante, N'Golo Kante, ba-da-ba-da-da, N'Golo Kante, ba-da-ba-da-da. Il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo Messi, bientôt sur les Champs-Élysées. N'Golo Kante, N'Golo Kante, ba-da-ba-da-da, N'Golo Kante, ba-da-ba-da. भाई, and we don't give him enough credit. Yes, he may not score you the goals, he may not be so fancy, लेकिन भाई जो करता है hardly कोई जानता हूं मैं वर्ल्ड फुटबॉल में who is able to do that at that level so consistently over so many years. And this is a fact यार, 70% of earth is filled with water, the rest is with N'Golo Kante. Goosebumps आ रहे हैं मुझे, मैं बोल रहा हूं तो भाई, this guy is literally everywhere. हमें याद है वो मतलब क्षण यार, 2021 का था obviously, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल हम जीते थे अगेंस्ट रियल मैड्रिड, एंड N'Golo Kante was crucial not just for that match but for entire tournament. वो सेमीफाइनल का ये वाला तो आपको याद होगा भाई, मैंने एक रिकॉर्ड किया था 2 साल पहले. Wow, had a hand in both the goals, especially the second goal. Wow, he was winning the ball in midfield for fun. It was a defensive header. I believe he probably won the header against Benzema. The ball rebounded and the second ball was about 20 yards away. He ran in a second beyond Jorginho and one of the Madrid players to actually win the second ball as well. And then he intercepted, passed it to Pulisic, who dribbled past the player and passed it to Mount. Fantastic finish. Assist to the assist, deserves praise in my opinion. N'Golo Kante. That's it. Thank you, N'Golo Kante. That's all I can say. Please keep that form till the final. And then he went on to even win the man of the match in the final. By 2-3 man of the matches in the knockout late stages of the competition, owned the midfield of any team in that tournament. Or not just that, I forgot to say he's also won the World Cup and the Nations League. क्या ही बचा यार, तो that's why he's probably going at the age of 32. लेकिन compared to Benzema जो 36 पे जा रहा है, and even at 32 as a defensive midfield he's being paid almost the same as Benzema. तो वो बोलता है the value that he gives to the team. That is what he does. Really a team man. भाई मेरे ख्याल से we are making a mistake, my personal honest opinion, because हमें चाहिए कुछ experience. This guy has been there the club since almost 7 years और अब हम जाने दे रहे हैं.
यस ऑफ कोर्स फ्री में वो भी, तो विल वी यूज दैट वेजेस जो हम सेव कर रहे हैं टू गिव अ कॉन्ट्रैक्ट और अ बेटर वेज सैलरी ऑफर टू मेसन माउंट? आई डोंट नो, मतलब मे बी ही इज अ टीम मैन, ही जस्ट मे बी सजेस्ट दैट, आई एम जस्ट सेइंग कुड बी अ पॉसिबिलिटी. भाई अगेन इतना हम्बल बंदा जो उसका हंसी भी उड़ाए ना, द गाय वाज ऑलवेज विद अ स्माइल यार, ऑलवेज. रियली रियली इमोशनल मोमेंट फॉर मी एज वेल एज, मतलब इतना सिंपल बंदा है. मुझे याद है एक बार एक वीडियो लिया था स्टैमफोर्ड ब्रिज में, एंड यू सी दैट वीडियो शॉर्ट क्लिप यार, आप स्माइल आ जाएगी आपके चेहरे में कितने भी आप बुरे मूड में हो. दैट्स हाउ इट इज. Hello everyone, it's N'Golo Kante. I'm here in Stamford Bridge, spending a little time with little people in the stadium. Look at this beautiful stadium. Just wanted to show you what. Bye. That is N'Golo Kante for you, and the guy gave everything. भाई बहुत ही underrated midfielders, एक पोजीशन जो ऐसे भी इतना क्रेडिट नहीं मिलता है. But things change and things go to be respected क्योंकि उसने इनफ किया है और उसने कहीं ना कहीं, yes you can argue that 7-8 साल at the highest level could have been at least 10-12 years, लेकिन नहीं, maybe this is the time क्योंकि बहुत इंजरीज हो रहे थे and he feels कि यार he is not ready to play every minute, और maybe वो जो सैलरी दे रहा है चेल्सी से, he is something of a team man, तो बोला होगा चलो ठीक है I'll take this rather, and so it's a win-win. That's what it seems like, or maybe Pochettino से बात किया, I don't know what has happened, but आप लोग बोलिए what do you think about it. But of course talking about emotional moments, but before I go to that, the moment जो चीज मैं याद कर रहा था, बहुत इमोशनल हो गया यार मैं, and I'm really sorry about this guy, but it's really making me emotional. The one moment that I definitely remember, Thomas Tuchel ने बोला था last season, can never forget this. N'Golo Kante is our Mo Salah, he's our Van Dijk, he's our De Bruyne, he's our Neymar and Kylian Mbappe. That is N'Golo Kante for you. Sorry guys anyway. So but yeah, before we move on to AC Milan, of course Maldini की बात करेंगे. नेमार की बात चली तो भाई बता देते, there is a strong story that Neymar will definitely be moving PSG से, लेकिन where will he go is a big question. I am still doubtful कि वो move करेंगे, because for me they cannot lose Messi Neymar in the same window, वो possible नहीं है. as much as Kylian Mbappe रहेंगे, Verratti रहेंगे, I still don't see Neymar moving. but अगर मूव करेंगे तो भाई चेल्सी तो मूव नहीं करेंगे. तो रिपोर्ट्स आ रही है अगेन दैट चेल्सी आर स्ट्रांगली लिंक्ड विद नेमार, इनफैक्ट वेरी स्ट्रांगली हम ट्राई करेंगे एक्सेट्रा. बट जितना भी ट्राई करे भाई, नेमार इज एट दैट पॉइंट जहां पर वो जीतना चाहेगा और ट्रॉफीज. I don't think it's a question about money only. So I think I am very surprised अगर Neymar goes that way, because remember he's not in the World Cup, which was one of the disappointments for him. So he would like to win something at the club highest level. With all due respect, हम Champions League में नहीं. So maybe just Newcastle से tempt हो सकते हैं if they go for him. In case Ferran Torres वहाँ नहीं जाए, जो हमने कवर किया था कल के स्टोरी में. लेकिन in my personal opinion, I still feel कि PSG में ही रहेंगे somehow. Although the fans have disrespected him, that's a fact. Yeah, but talking about basically Chelsea connections as well, थोड़ा बहुत मैं बोल देता हूँ. I know बहुत लंबा खींच रहा है वीडियो, लेकिन hopefully आप end तक देखें, because Maldini का story is even more emotional, to be very honest. So Pulisic bro, Pulisic Chelsea में he's been linked away, and this guy has been linked to AC Milan. Talk about AC Milan, right? तो again काफी सरप्राइज हूँ, क्योंकि वहां पर रफाइल लिया हुआ है. तो आप रफाइल लिया है तो भाई आपको कहां मिलेगा मौका? राइट विंग, विच इज व्हाट दे वांट. दैट्स नॉट हिज फेवरेट पोजीशन एनीवे. समझ नहीं आता व्हाई इज ही बीइंग लिंक्ड, और लेजी जर्नलिज्म क्यों हो रहा है. लेट्स सी, मे बी वो रेडी है राइट विंग में खेलने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उसको नहीं मिल रहा है मौका लेफ्ट विंग में, इवन चेल्सी और अदरवाइज. तो दैट इज व्हाई ही इज मे बी ओपन टू इट, लेकिन ही इज डेस्परेट टू लीव चेल्सी, वो क्लियर है. शायद हमें कट प्राइस डील में सेंड करना पड़े, स्पेशली क्योंकि जो एसी मिलान का न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे उसकी वजह से रूबन लॉफ्टस-चीक का जो मूव होने वाला था शायद ऑन होल्ड हो गया है. तो वी माइट लेट गो दिस गाय इफ दे आर इंटरेस्टेड. लेट्स सी. अगेन वेरी एनिग्मेटिक प्लेयर मैं बोलता हूँ, कुड हैव डन बेटर फॉर श्योर, शुड हैव डन बेटर, लेकिन कैप्टन अमेरिका ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ जर्सी सेल्स एज वेल. तो नो रियल कंप्लेंट्स एज सच, बट हाँ, कुड हैव डन, शुड हैव डन बेटर फॉर श्योर. लेकिन हाँ, अगेन बिफोर आई मूव टू एसी मिलान ब्रो, गैब्री वेगा सेल्टा वीगो गाय याद है, जो लास्ट वीकेंड लिटरली एस्केप करवाया था सेल्टा वीगो को विद हिज ब्रेस अगेंस्ट बार्सिलोना. 2-1 विक्ट्री थी, एंड दैट सेकंड गोल वाज ब्रिलियंट गोल. भाई he has been linked not only to Newcastle but Chelsea as well. आज 33.5 million pound का उसका है रिलीज क्लॉज, एंड दैट मीन्स दैट ही इज समवन, डिस्पाइट एक ही साल हुआ है सीनियर फुटबॉल इन ला लीगा, कैन मूव विद दैट रिलीज क्लॉज इफ इट्स मेट.
On the other hand, उसका मार्केट वैल्यू 30 million euros. There's a huge difference, about 10-12 euros का difference होगा दोनों में, लेकिन it's worth it in my opinion. 21-year-old Spanish youth international है. In my personal opinion, just 22 turn हो रहा है, लेकिन he is doing much more than his weight. In terms of basically पहले ही full season में ला लीगा में उसने 11 गोल और 4 असिस्ट मारे हैं from a position of number 8 और number 6 और number 10. So that is exactly the player जो हमें चाहिए, जो हमें शायद मिस करना पड़े in terms of Mason Mount or maybe even N'Golo Kante in terms of number 6, number 8. So I know he's more of a Mason Mount than N'Golo Kante for sure. He's more of Maddison type of player. लेकिन आई थिंक अगर मैडिसन उसमें कंपेयर करो, आई विल स्टिल गो विद मैडिसन. लेकिन आई थिंक गैब्री वेगा शोज समवन जो बहुत ही एक रखता है जज्बा और हु हैज अ फ्यूचर लीडरशिप एज वेल. स्पेनिश इंटरनेशनल हो सकता है एज वेल. आई थिंक दे हैव डन वेल फॉर अस, हमें पता ही है. तो आई थिंक देयर आर लॉट गोइंग. राइट फुटेड है, बट एट द सेम टाइम ही इज कंफर्टेबल विद बोथ फीट. आई थिंक यू नो व्हाट, मैं कंपीट करना चाहूंगा. एंड फॉर पीपल सेइंग दैट उसको चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहिए, भाई 21 साल का बंदा. आई थिंक अभी इतना डेस्परेट नहीं होगा फॉर चैंपियंस लीग फुटबॉल. एंड एनीवे वी आर चेल्सी फुटबॉल क्लब, वी विल गेट देयर. बट या टॉकिंग अबाउट बिग क्लब्स, AC Milan, definitely a tribute to Maldini as well. Wow, भाई it is a new era for sure. Maldini मतलब 1986 से 2009 तक ये बंदा AC Milan का कैप्टन था almost. Not for the entire while, but you know, for majority of the while. He was there, the back line, ever present. Maldini, center back. Maldini, left back. Maldini, भाई definitely एक Rolls Royce on the field. But then he had to retire. फिर भी with what? 7 Italian championships. 3 UEFA Champions League, all with AC Milan. यहाँ पर मैंने कोपा इटालिया ऑफ द वर्ल्ड और सुपर कप्स और यू नो क्लब वर्ल्ड कप्स के बारे में बात ही नहीं की. That is what the success you define by, and he did all at AC Milan. What loyalty, what a quality player, one of the all-time greats. And then he took a break थोड़ा सा, फिर वापस आया AC Milan में, I think after 9-10 years as a technical director. And shockingly, भाई जो हुआ AC Milan में in the last season and a half, Scudetto जीते, got new owners, but पैसे नहीं थे because they had to save not only for the new stadium, but there's a lot of transactional things going on. तो उनको नहीं मिला पैसा. Despite that, बंदे ने किया राफेल लियाओ को साइन एंड एक्सटेंड, थियो हर्नांडेस को सेम, इस्माइल बेनेसेर को एक्सटेंड, सैंड्रो टोनाली ही केप्ट हिम, सिमोन कियर, माइक मैग्नियन जो लिंक है चेल्सी के साथ बाय द वे, कलुलू, टोमोरी एंड व्हाट नॉट. इतने सारे प्लेयर, जीरो को भूल गए भाई. 9-10 बढ़िया प्लेयर्स को उसने या तो साइन करवाया या तो एक्सटेंड करवाया. एंड एवरीथिंग, माइंड यू, एवरीथिंग अंडर 30 million euros. Each and every one, not even one over 30 million euros. Some fantastic signings and extensions. और उसको हम कर रहे हैं sack. Yes, him and the co-director have been sacked. कहीं ना कहीं they do not meet on terms जो future देख रहे हैं either side, be the owners or the directors, और इसलिए parted ways. How can you do that with such a legend? भाई अभी भी I remember as we sent a Rafael Leao extension, I think Maldini was key in that. Maldini जब बात करता है क्या हो रहा है बंदे का, or not just that, his experience in the game of football, he's one of the most respected guys. मतलब how can you just do that यार? Owners I understand totally, but come on, I don't get it at all. और भाई कोई भी बोल रहा है माल्डिनी कोई और क्लब का हो सकता है टेक्निकल डायरेक्टर, माल्डिनी इज मिलान, मिलान इज माल्डिनी almost. Very surprised by that. बहुत ही shocking. In fact, not just me, it is the players of Milan भी कल उन्होंने जाहिर किया अपना बेसिकली एक डिससैटिस्फैक्शन बोल दो या सरप्राइज शॉक बोल दो. स्पेशली माइक मैग्नियन, राफेल एंड अदर्स. उन्होंने माइक मैग्नियन तो स्टोरी भी डाला था एंड विद यू नो द इमोजीज एंड द क्वेश्चन मार्क्स एंड ऑल दैट. बट एनीवे दैट्स फुटबॉल फॉर यू, दैट इज मॉडर्न डे फुटबॉल. बट टॉक अबाउट मिलान, भाई रिमेंबर दे हैव टू डू सम साइनिंग्स नाउ. अब देखते हैं क्या करते, वेदर दे विल गेट पुलिसिक, वेदर दे विल गेट RLC का कमाड़ा, गॉड नोस क्या होगा. बट अभी के लिए इतना ही है. अगेन रिमेंबर N'Golo Kante, Martin, legends, easily forgotten, lekin never forget them, and let's see what the transfers we get for these clubs. All the best and see you soon on both the channels. आज शायद Almighty Sports पर भी हो, not just on Almighty Blues, always a fan channel for all to see.